and the military rise of China. अगर हम इंट्रोडक्शन बनाते तो ऐसा कुछ बनाते. अभी थोड़ी देर पहले जो पिछली क्लास थी तो उनको एक तरीका मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लिखने का. एक तरीका ये है जो अब मैंने ये बनाया. कैसे? हमने 20th सेंचुरी को एज अ केस स्टडी प्रेजेंट किया कि 20th सेंचुरी में द राइज एंड फॉल ऑफ पावर्स हुआ और 21st सेंचुरी में वो चीज दोबारा रिवाइव हो रही है. यानी कैसे? 20th सेंचुरी की बिगिनिंग मल्टीपोलर थी एंड उसका यूनाइपोलर था. यूनाइपोलर था. जबकि 21st सेंचुरी की बिगिनिंग क्या हो गया है? दुनिया इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर होती जा रही है. So one of the best technique to write an introduction is this. वही अगर सेम पैटर्न आपको मिल रहा है the rise and fall of powers का मिसाल के तौर पे, तो हम क्या करें? अब दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है, हमने इसको कहां से शुरू करना था? एक बेहतर तरीका क्या है? दुनिया 1991 में यूनाइपोलर हो गई, हम यहां से शुरू करते क्योंकि यूएसएसआर का फॉल हुआ और यूएस वाहिद ग्लोबल हेजेमन बन गया. एक तो ये तरीका शुरू करने का. दूसरा, वो सारा पैटर्न ही उठा लो कि 20th सेंचुरी पहले मल्टीपोलर थी, फिर बाइपोलर हो गया दुनिया और फिर यूनाइपोलर हो गई दुनिया. अब 21st सेंचुरी का पहला हाफ क्या है? दुनिया इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर होती जा रही है, जिसमें रिट्रीट्स टू यूएस है, रिसर्जेंस ऑफ रशिया है एंड राइज ऑफ चाइना है. अच्छा, एक और भी रूल बता दूं. इंट्रोडक्शन इज necessarily written in one paragraph. रूल के मुताबिक इंट्रोडक्शन, यार आयशा मुख्तार मैं इतनी मेहनत से चीख चीख के बोल रहा हूं और तुम कहते हो कि डिस्टॉर्शन है. मेरा दिल कर रहा है मैं कि मैं कहूं कि चल जान ही एक्सप्लेन करता. पक्की वाली डिस्टॉर्शन है. ओके ओके ऑलराइट, पक्की वाली. मान ली मैंने तुम्हारी बात. ओके introduction is necessarily written in a single paragraph, rules के मुताबिक. But at times rules are being broken. कभी कभी हम rules तोड़ देते हैं और इतने अच्छे तरीके से तोड़ देते हैं कि वो रूल तोड़ना भी अच्छा लगता है. इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में इंट्रोडक्शन को हम दो हिस्सों में तकसीम किया. पहले में हमने क्या कर दिया? वो डिस्कशन की जिसमें दुनिया मल्टीपोलर से यूनाइपोलर हो गई. फिर दूसरे पोर्शन में हम आ गए, दुनिया मल्टीपोलर होती जा रही है एक बार फिर. ये दोनों एक पैराग्राफ में फ्यूज भी हो सकते हैं, ये दोनों अलग भी हो सकते हैं. चॉइस इज योर्स. बात की समझ आई? Can you give another example of breaking the rule?
There are so many good examples without breaking the rule. अभी थोड़ी देर पहले लंबू क्लास में थी, उन्होंने सुन लिया कि हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन. आपको टेस्ट सीरीज ऑनलाइन अगर हम ऑफर कर सके तो उसमें भी आपको ये बताते जाएंगे. One of the best way to write an introduction is to write from the opposite aspect of the topic. मिसाल के तौर पे करंट टॉपिक क्या है? रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी इन पाकिस्तान. उसकी शुरुआत कहां से करें? द डिक्लाइन ऑफ मिलिटेंसी इन पाकिस्तान. 2014 से लेके 14 से लेके 18 के दरमियान में क्या होता रहा? ऑपरेशन होते रहे और मिलिटेंसी स्टेडली डिक्लाइन कर गई. लेकिन एक बार फिर अब मिलिटेंसी राइस पे है. एक तरीका तो ये है. दूसरा, यही जो मैंने ये तरीका यहां पे अप्लाई किया इस टॉपिक में, ये एक केस स्टडी रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी इन पाकिस्तान पे भी अप्लाई हो सकता है. कैसे? अफगानिस्तान में पहले फॉल हुआ ऑफ अफगान तालिबान, लेकिन 20 साल की लड़ाई के बाद अमेरिका, नेटो पूरा और नॉन नेटो कंट्रीज ने 150,000 plus troops भेजे, all the possible military technologies भेजी. 2 decades long war, longest ever war in its history, the most expensive war in its history लड़ी. लेकिन end result क्या हुआ? अफगान तालिबान came into power once again. पाकिस्तान में भी क्या हुआ कि 2013 से लेके 2018 के दरमियान में सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस हुए और हमने अनाउंस किया कि हमने वॉर ऑन टेरर को विन किया. लेकिन वो हमारी विक्ट्री शॉर्ट टर्म साबित हुई, क्योंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिवाइवल ऑफ मिलिटेंसी इन पाकिस्तान हुआ है. जो भी कर सकते हैं. एक और तरीका भी हो सकता है, वो हर किसी को पता है. जनरल स्टार्ट ले लो, जनरल ब्रॉडर स्टार्ट ले लो. ब्रॉडर स्टार्ट में यहां पे कैसे लूंगा कि history has experienced the rise and fall of powers. There was time United Kingdom was the global hegemon and continued its hegemony for more than 300 years. There was time when Rome was an empire and continued its hegemony for more than 700 years. There was time Babylonian Empire ruled the world for hundreds of years. लेकिन modern world belongs to United States of America, जो कि global hegemon बन गया in 1991. लेकिन उसकी हेजेमनी को सीरियसली चैलेंज किया हुआ है किसने? द राइजिंग चाइना ने एंड रिसर्जिंग रशिया ने. ऐसा लिख लेता. यस, यू कैन स्टार्ट इट विद द कोट. किसी कोटेशन से शुरू कर सकते हैं, किसी इवेंट से शुरू कर सकते हैं. For example, during the visit of Vladimir Putin to Beijing, the joint press release focused on the strategic partnership between United States, between Russia and China on one hand, and to challenge the US-led global order on the other. ऐसे भी शुरू कर सकते. तो ये तो टॉपिक पर डिपेंड करता है
कि कैसा हमें वो उस वक्त जहन में आ रहा है, डेवलपमेंट हमारे जहन में आ रही है, कोई पर्टिकुलर इवेंट, कोई ब्रॉडर स्टार्ट नजर जहन में आ रहा है, कोई केस स्टडीज आ रही है, या अपोजिट या फ्लिप ऑफ द कॉइन नजर आ रहा है, जो भी है एक एस्पेक्ट उठाओ। लेकिन एक बात पक्की है, आखिरी पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होगा, वो टॉपिक जो पेपर में दिया गया है, वो इंट्रोडक्शन का मेन पार्ट वो होगा, आखिरी पार्ट वो होगा। समझ आई सबको? कमिंग मैगजीन में मैंने यही करने की कोशिश की है बार बार। मैं पूछ रहा हूं, समझ आई तुम लोगों को कि नहीं? ओके। मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में मैगजीन आ जाएगा। और फिर कह रहा हूं, कम से कम 5, 6, 10 सोर्सेस के साथ मिला के मुझे कंपेयर करो, एक दो के साथ नहीं। आफ्टर 20 अक्टूबर नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेट मी कन्फर्म। वैसे मैं इन चीजों को फॉलो नहीं करता, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे बताया गया था। अच्छा, नोवा बुक शॉप से पूछा था, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेशन में मैं जंप नहीं करता जब तक जरूरी ना हो। ओके। नाउ अब हम बात करेंगे यूएस इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। हमारा पहला पॉइंट हो गया है यूएस इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। यहां पे सुप्रीमेसी नहीं, इकोनॉमिक सुप्रीमेसी। वो कैसे आई? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड ने क्या कर दिया? यूरोपियन पावर्स का फॉल कर दिया। यूनाइटेड किंगडम का, जर्मनी का, फ्रांस का, उसके अलावा फिर जापान का, यूरोप के अलावा जापान का फॉल हुआ। ये यूरोप में नहीं आता, इनका फॉल हुआ। ये हाउ लफ्ज यहां पे मिटा दो। अच्छा, एक मिनट। और फिर ऑन द अदर हैंड, नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। ऑन द अदर हैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या बना? कंटिन्यूड ग्रोइंग, वो ग्रो करता रहा। कैसे ग्रो करता रहा? द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री के तौर पे वो इमर्ज हुआ। द वर्ल्ड मेजर एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के तौर पे इमर्ज किया उसने। तीसरा, द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंकिंग सिस्टम के तौर पे उसने इमर्ज किया। द वर्ल्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसने इमर्ज किया। वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज के तौर पे उसने इमर्ज किया। वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर के तौर पे उसने इमर्ज किया। तो एक बात तो मैंने क्या कही, वो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो डिटरमाइन करते हैं राइज और द फॉल ऑफ अ नेशन। मैंने इंडस्ट्री की बात की, एग्रीकल्चर की बात की, स्टॉक की बात की, बैंक्स की बात की, इन्वेस्टमेंट की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, गो ठीक। हाँ, दूसरा काम क्या हुआ? ये तो नेशनल लेवल पे हुआ। और आखिरी बात हमने क्या कर दी? प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी बन गया। तो मतलब क्या, बियॉन्ड द बॉर्डर हम चले गए।
बियॉन्ड द बॉर्डर चले गए, यानी इंटरनेशनल लेवल पे बात करने लगे हैं यूएस का रोल ऑन इंटरनेशनल लेवल। 1946 में क्या हुआ? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका became the controller of the world sea routes। वर्ल्ड सी राउट्स का वो कंट्रोलर बन गया। वर्ल्ड सी राउट्स क्या है? स्ट्रेट्स एंड कैनाल्स। मिसाल के तौर पे स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, हार्मूज का, या अदेन का, या जिब्राल्टर का, मलाका, ये स्ट्रेट्स हैं। और उसके बाद फिर कैनाल्स लाइक पनामा कैनाल, पनामा कैनाल, स्विस कैनाल, SUEZ, स्विस कैनाल, एटसेट्रा। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो चोक पॉइंट्स हैं इन द इंटरनेशनल वाटर्स वो कंट्रोल कर लिए। कैसे? बाय डिप्लॉइंग इट्स नेवी, अपनी नेवी को डिप्लॉय करके। क्यों डिप्लॉय किया उसने? देयर वाज नो अदर कंट्री, there was no other country that could ensure the smooth trading in the international waters, क्योंकि यूके का, जर्मनी का और बकिया नेवल पावर्स का फॉल हो गया था और वाहिद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रह गया था जो ग्लोबल लेवल पे ये रोल प्ले कर सकता था। उन्होंने यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे ऑफर कर दिया कि ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी। तो तब से लेके आज तक वो इंटरनेशनल ट्रेड राउट्स का कंट्रोलर बैठा हुआ है। ठीक। दूसरा क्या हुआ? ब्रिटन वुड सिस्टम बना। ब्रिटन वुड सिस्टम, उसमें दो बड़े इदारे बने, IMF, IBRD, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, ब्रिटन वुड सिस्टम के साथ ये भी नोट कर दे, ये 1944 में हुआ था। 1944 ब्रिटन वुड्स में हुआ था। अमेरिका में जगह का नाम है ये, वहां पे हुआ था, इन ब्रिटन वुड्स, US। अच्छा, और इसमें दो बड़े इंटरनेशनल मॉनेटरी बॉडीज बने। और फिर यहां पे क्या था? वोटिंग शेयर। वोटिंग शेयर, ये याद रखो, अमेरिका का राइज बता रहा हूं। वोटिंग शेयर was decided, वोटिंग शेयर डिसाइड हुआ था on the basis of the GDP size of the country। मतलब क्या? वन कंट्री वन वोट नहीं था, बल्कि GDP साइज के बुनियाद पे, उस वक्त जो ममालिक की GDP साइज थी उसके बुनियाद पे शेयर डिसाइड हुए। और सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन बना? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तकरीबन 35% ऑफ द शेयर बिलोंग टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द बिगेस्ट शेयर होल्डर इन द वोटिंग राइट और डिसीजन मेकिंग राइट। वोटिंग एंड डिसीजन मेकिंग राइट में वो मेजर वोटर बना। और उसके बाद फिर US and Europe dominates and controls
वो डोमिनेट करता है और कंट्रोल करता है। यूएस एंड यूरोप क्या कर रहा है? मिलके कंट्रोल कर रहे हैं। पहली बात तो ये, तो सबसे बड़ा वोटिंग राइट मिला, ये वाली बात हमने एक्सप्लेन कर दी। दूसरा, ये निचला सेंटेंस सारा मिटा दो। हाँ जी, उसके बाद फिर both the banks were supposed to keep their reserves, दोनों बैंक्स ने अपने रिजर्व्स रखने थे in multiple currencies like pound, franc, French currency, franc, but mainly dollar. दूसरा, secondly, it provides loan to countries mainly in dollars. ये लोन प्रोवाइड करता है दुनिया के ममालिक को किस चीज में? डॉलर में। That helped the dollarization of international monetary system, जिसने इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को डॉलराइज कर दिया। एक और हेडिंग बनाओ, एंड दैट इज US was to print its dollar against gold, and the rest of all the members were to print their currencies against, member nations were to print their currencies against dollar. यूएस ने अपनी करेंसी डॉलर को प्रिंट करना था गोल्ड के अगेंस्ट, और बाकी तमाम ममालिक ने जो मेंबर कंट्रीज ऑफ ब्रिटेन वुड्स थे उन्होंने प्रिंटिंग करनी थी अगेंस्ट डॉलर। सिंस देन, तब से लेके आज तक, डॉलर इज द मेजर रिजर्व करेंसी ऑफ द स्टेट बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड कंट्री। तब से लेके आज तक डॉलर दुनिया की मेजर करेंसी है। ये हमने उधर भी पढ़ा होगा, यूएस चाइना में। नहीं पढ़ा तो यहां पे नोट कर दें। नेक्स्ट, मजीद क्या हुआ? ये 3 पॉइंट छोड़ दो, बाकी मैं उठा दो सारा। IBRD में उठा दो। लाइबा, यूं हुआ कि अमेरिका ने कहा कि मैं अपनी प्रिंटिंग ऑफ डॉलर करूंगा, ये डॉलर को प्रिंट करूंगा गोल्ड के अगेंस्ट, यानी मेरे पास जितना गोल्ड होगा मैं उतने डॉलर प्रिंट करूंगा। और क्या दुनिया ममालिक को कहा कि आप गोल्ड के अगेंस्ट प्रिंटिंग नहीं करेंगे बल्कि डॉलर के अगेंस्ट प्रिंटिंग करेंगे। तो बच्चा तमाम मेंबर नेशन ने कहा कि हम प्रिंटिंग करेंगे अगेंस्ट डॉलर। तो इस तरीके से दुनिया के जो स्टेट बैंक्स हैं, पाकिस्तान का स्टेट बैंक, अमेरिका, बरतानिया का स्टेट बैंक और गोवान, उन्होंने प्रिंटिंग अगेंस्ट डॉलर शुरू कर दी। तब से लेके आज तक दुनिया में आज भी मेजर रिजर्व करेंसी कौन है? डॉलर। यानी स्टेट बैंक की रिजर्व करेंसी कौन? डॉलर। ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ? GATT 1945, 1944, GATT 1944, ब्रिटेन वुड्स। पार्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स। ये क्या था? पार्ट ऑफ ब्रिटेन वुड्स था।
and WTO 1995 में इन दोनों ने क्या कर दिया? लिबरलाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हेल्प्ड in the liberalization of international trade. कैसे? All the member nations of Bretton Woods and later on of WTO were to remove the tariff barriers. Tariff mean taxes, tariff barriers and non-tariff barriers. ये टैक्स के अलावा जो बैरियर्स हैं, मिसाल के तौर पर वीजा ना देना, मिसाल के तौर पर नेगेटिव लिस्ट, ये लंबी कहानी है। और ये कैसे किया? बाय साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, बाय साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स with one another, and by awarding MFN status, by awarding MFN, most favorite nation, most favorite nation. ये क्या है? A concept in which states reduces the barriers, the taxes to 12 or below %, 12% या उससे कम टैक्स रखते हैं, and maximum taxes allowed is 38%. The driving force between both the ideas of both the initiators, ideas नहीं, initiators, idea तो एक है free trade, GATT, Bretton Woods अलग अलग initiatives, उनके पीछे कौन था? United States of America. ड्राइविंग फोर्स भी यही था और सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भी यही था. The driving force and the middle beneficiary. Done. अब आपको यूएस का राइस पढ़ा रहा हूं. नेक्स्ट, ये ट्रेड लिबरलाइजेशन का पॉइंट है, वो हटाओ. ये 3 सेंटेंसेस हटाओ. Okay. Petrodollar agreement of 1970s, 79, 70s. बसत ये मेरा टॉपिक नहीं आज जो आप सवाल कर रहे हो. कुछ केसेस में स्टेट्स को इजाजत होती है हायर टैक्सेस अलाउ करने लगाने की, लेकिन जो ममालिक डब्ल्यूटीओ के पॉलिसीज को मेजरली फॉलो नहीं करते तो फिर दूसरे ममालिक उनके साथ कुछ तरीके से फ्री ट्रेड नहीं करते. पाकिस्तान उस कैटेगरी में फॉल करता है जिनके साथ सीरीज ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड फ्री ट्रेड के लिए तैयार नहीं है. Okay, petrodollar agreement of 1970s signed between Saudi Arabia and United States of America, between USA and KSA.
that dollarized the international trade. उसने इंटरनेशनल ट्रेड को डॉलराइज कर दिया. कैसे? Saudi Arabia announced to conduct its oil trade in dollars. पहला पॉइंट ये लिखो. सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल ट्रेड डॉलर में करेगा. ये जो इन्वॉल्व ट्रेडिंग एक्सक्लूसिवली इन डॉलर, ये हटाओ. सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल ट्रेड डॉलर में करेगा. उसके बाद OPEC also passed a resolution. OPEC के साथ ब्रैकेट में लिख दें, लिखा हुआ है, OPEC लिखा हुआ है. OPEC कौन है? Organization of Petroleum Exporting Countries. Organization of Petroleum Exporting Countries. So, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने भी अनाउंस किया कि वो अपना ऑयल ट्रेड किस में करेंगे? डॉलर में. और इस तरीके से दुनिया की सबसे बड़ी कमोडिटी, दुनिया में सबसे बड़ी कमोडिटी क्या है? ट्रेडिंग कमोडिटी ऑयल है. वो ट्रेड क्या हो गया? डॉलराइज्ड. और वंस ऑयल ट्रेड डॉलराइज्ड हुआ, ऑटोमेटिकली दुनिया का बकिया ट्रेड भी डॉलराइज्ड हो गया. एक और पॉइंट ऐड कर दो. ये सेंटेंस सारा हटा दो, 6 नंबर का सेंटेंस हटा दो, एक और पॉइंट ऐड कर दो. United States of America adopted the strategy of collective economic growth by relocating its industries and providing aid. Relocating its industries and providing aid to the allied countries, to the allied countries, to the allied countries. The first and the major focus for this policy was Europe. पहला फोकस सेंट्रल यूरोप था, फिर वेस्टर्न यूरोप था, फिर ईस्टर्न यूरोप था. सेंट्रल, फिर ईस्टर्न, वेस्टर्न, फिर ईस्टर्न यूरोप हुआ. उसके बाद इंडो पैसिफिक नेशंस लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया एंड आसियान हुआ.
बच्चे तुम जो भी वैसा टाइपिंग कर रही हो, तुम जो भी हो, तुम बहुत अच्छी हो. You pick up things the way I want. Good. तुम हो कौन बाय द वे? तुम्हारा नाम क्या है? हाजरा बतूल. ओके. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इन ममालिक में फोकस किया और फिर 1970s में चाइना पे फोकस किया. 70s एंड 80s में चाइना पे भी फोकस किया. 70s एंड 80s में चाइना वाज द फोकस. एंड यूएस ने जो रिलोकेशन की इंडस्ट्रीज, इससे क्या कर दिया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका expanded its economic and diplomatic clout. Economic and diplomatic clout across the world. एक और पॉइंट ऐड कर दो. Furthermore, United States of America became, एक और पॉइंट है. Furthermore, United States of America became a major investor in natural resources, primarily hydrocarbons, across the world. Middle East, जिसमें सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, उसके बाद फिर इराक, लिबिया एटसेट्रा प्राइम फोकस रहे. एक. दूसरा ईरान. ईरान को भी मिडिल ईस्ट में ही डाल दो क्योंकि वो मिडिल ईस्ट का हिस्सा है. और दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम मिडिल ईस्ट वो खुद बन गया. became the largest importer of hydrocarbons that helped in the industrialization. Largest importer of hydrocarbons helped becoming the largest industry in the world. मैंने आपको ये बताया कि वो दुनिया का सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बनी. अच्छा, एक और पॉइंट भी ऐड कर दें प्लीज, क्योंकि मुझे टॉपिक का नहीं पता कि टॉपिक कैसे आएगा. एंड दैट इज अब जो ऊपर मैंने ट्रांजैक्शन की बात की थी, डॉलर की, बैंक्स की बात की थी, उसके साथ ये लिंक करेंगे. द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम, currency transaction system, is controlled by United States of America. कैसे? Majority of the global transaction, which is more than 80% of the global currency transaction, याद एक मिनट, ग्लोबल करेंसी ट्रांजैक्शन कहो. ग्लोबल करेंसी, वो ऊपर लिखा हुआ है ग्लोबल ट्रांजैक्शन लिखा है. ग्लोबल करेंसी ट्रांजैक्शन इज ऑफ डॉलर. वो किस चीज की है? इज ऑफ डॉलर. वो डॉलर की है. इज ऑफ द डॉलर नहीं, इज ऑफ अ डॉलर. वो डॉलर की है. एंड it is controlled by
IMF, World Bank, and primarily US owned banks connected with the state banks of the world country. Therefore, इसलिए क्या है? The only country in the world that can impose serious sanctions, the only country in the world that can impose serious sanctions थैंक यू आयशा बाबर, आपने ठीक कहा। अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम और उसका मेजर जो नाम है वो स्विफ्ट है। अगर कोई सीरियस सैंक्शन लगा सकता है तो वो यूएसए है। अब वो कैसे? वो फ्रीज करता है द डॉलर अकाउंट्स, which freezes the foreign or the dollar accounts of world countries. Foreign or the dollar accounts of world countries. Point clear? अब एक और पॉइंट, द इकोनॉमिक डिक्लाइन लिखा हुआ है, इकोनॉमिक डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये लास्ट ईयर ये पेपर में आ चुका है। यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, 26 ट्रिलियन डॉलर की है, लेकिन क्या है? 33 ट्रिलियन डॉलर का उस पे डेट है, कर्जा है। 124% डेट टू जीडीपी रेशो है, 124%, 123%, 123% डेट टू जीडीपी रेशो है। यानी जीडीपी से 23% ज्यादा टैक्स है, सॉरी लोन है। टोटल साइज 26 ट्रिलियन है, कर्जा 33 ट्रिलियन है। उसके बाद फिर सिंस 2003 उस पे $1 ट्रिलियन प्लस अ ईयर इजाफा हुआ है। और फिर ये हाउ मिटा दो, उनमें से मोर देन 60%, 50 नहीं, मोर देन 60% इंडिजिनस लोन है। और उनमें से स्टेट बैंक ऑफ अमेरिका है, कमर्शियल बैंक्स है, बिजनेस एंटिटीज है, उनका कर्जा है। दूसरा एक्सटर्नल लोन है, जिनमें 1.5 ट्रिलियन प्लस चाइना का है, फिर दूसरे नंबर पे जापान है, फिर जर्मनी है, फिर यूएसए, सऊदी अरेबिया है, फिर क्या जीसीसी कंट्रीज है, फॉरेन बैंक्स है जिसमें वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक, सॉरी आईएमएफ है, एंड गो ऑन, उनसे कर्ज लिए बैठा है। और फिर यूएस जो ऑन एवरेज लोन एक्वायर कर रहा है इज मोर देन 4 बिलियन, नहीं है 3 बिलियन है, मोर देन $3 बिलियन पर डे। ये यूएस के साथ ऐसा हुआ क्यों? आगे नोट करते जाएं, बल्कि नोट हुआ है। सबसे बड़ी वजह क्या है? कलेक्शन इज लेस, एक्सपेंडिचर इज मोर। मतलब क्या? बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट। कलेक्शन कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। अगरचे अमेरिका के पास वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टैक्स सिस्टम है, उसके बावजूद भी उसकी कलेक्शन कैन नॉट मीट इट्स एक्सपेंडिचर। क्यों? एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। मोर देन 38% of the annual or budgetary spending of US, annual budgetary spending is allocated for the repayment of loans along with interest. यानी 100 में से 38 रुपए वो, या 100 में से $38 वो एलोकेट करता है किसके लिए?
कर्ज वापस करने के लिए, इंटरनल को और एक्सटर्नल सोर्सेस को कर्ज वापस करता है। उसी में एक बड़ा पॉइंट क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी मुल्क की तरह क्या करता है, बॉन्ड्स इशू करता है, बॉन्ड्स। हुकूमत पाकिस्तान भी बॉन्ड्स इशू करता है। 2020 में हमने सकूक बॉन्ड इशू किए थे, इस्लामिक बॉन्ड्स इशू किए थे। बॉन्ड में क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक बॉन्ड की कीमत है $1,00,000 और आपको कहा जाता है कि आप इसमें $1,00,000 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सालाना 7% मुनाफा होगा, यानी सूद मिलेगा आपको 7% इंटरेस्ट या 8% इंटरेस्ट। तो इन्वेस्टर को वो 7 to 8% अर्निंग मिलती है या 10% अर्निंग इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट मिलती है। फिर उस बॉन्ड की लाइफ होती है, वो 5 साल के लिए बॉन्ड है या 10 के लिए है या 3 के लिए है। जैसे वो बॉन्ड मैच्योर हो जाता है, यानी वो टाइम पीरियड उसका खत्म हो जाता है, तो फिर हुकूमत पाबंद है, बाउंड है to return the actual invested amount along with the interest। तो अमेरिका के लिए या किसी भी मुल्क के लिए वो साल बड़ा मुश्किल होता है जब उसने बॉन्ड की ओरिजिनल अमाउंट वापस करनी हो along with interest। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2011 ऐड कर दे इसमें 2008, पहले 8 लिख दे, 2008, फिर 2011, 16 मिटा दे, 2013, 18 एंड 23 वो साल हैं जो उन्होंने एक्चुअल अमाउंट वापस करनी। जो 12% है, 50% की फिगर्स हैं, ये ओमिट कर दो। सारा ओमिट कर दो। तो ये मुश्किल साल रहे हैं यूएस के लिए। Resultantly कैसे? To deal with this, US had to acquire more loan। यूएस ने मजीद लोन एक्वायर किए। एक और बड़ा फैक्टर, वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग, वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग, या वॉर ऑन टेरर ना कहो, वॉर स्पेंडिंग has been massive, humongous for United States of America। 2023-24 में महनूर खान, अमेरिका हर किसी से कर्जा ले रहा है। उसको पता चल गया कि तेरे पास डॉलर है, वो तुझसे भी कर्जा ले लेगा। वो दूसरा पाकिस्तान है। मनूर खान है, तुम्हारे पास भी डॉलर है, कुछ छुपाए हुए डॉलर कुछ है। ओहो, who are you? आयशा बाबर कह रही है डॉलर होता तो सीएसएस ना करते। तो तुमने अपने इंटेंशन का इजहार तो कर दिया कि तुम जब सीएसपी बनोगी
तो तुम मुल्क को लूटोगी। और तुम एक अच्छी खासी तगड़ी करप्ट ऑफिसर बनोगी। 5-6 अरब रुपए लूट के को 20-25 करोड़ की मस्जिद बना लोगी और हज कर लोगी और फिर कहोगे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। नहीं, हाय हाय। बाबर देखो, तरीन तुम पे बड़ा हंस रही है। बच्चियों की तो समझ आती है, लड़कों की तो समझ आती है वो क्यों हंस रहे हैं। ये तरीन तुम पे क्यों हंस रही है? उसकी शक्ल बता रही है कि वो खुद बड़ी कोई करप्ट किस्म की ऑफिसर होगी और तुम पे हंस रही है। बेचारी। ये जो ओके, नो मजीद कमेंट्स। कोमल हनीफ कह रही है, सर सब आप लड़कियों को तंग कर रहे हैं। लड़कों का भी कोई टाइम शामत आज। लड़कों को क्यों तंग करूं? क्यों? लड़के तो बहुत अच्छे होते हैं। अब वासे को कहो किंग होते हैं। किंग नहीं होते हैं। किंग तो पिंडी में बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो? किंग होते हैं, एम किंग होते हैं। ओके, वापस आओ। सो वॉर वॉर स्पेंडिंग में देखो, सदफ खान इतना कर्जा लेने के बावजूद भी दुनिया का बाप है। देख लो कैसे, अभी समझ आ जाएगी। वॉर स्पेंडिंग उनकी कितनी है? 2023-24 का जो डिफेंस बजट था वो $886 बिलियन था। $886 बिलियन। 2022-23 का बजट $856 बिलियन था। $856 बिलियन। और उसमें जो जापान को, इजिप्ट को, आजकल यूक्रेन को और इजराइल को और ताइवान को जो मिलिट्री एड दे रहा है वो इसके अलावा है। इसके अलावा फिर जो वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग थी, अगर ये कहीं पे ऐड नहीं हुआ तो ऐड कर दें। वॉर ऑन टेरर स्पेंडिंग 6.5 ट्रिलियन थी। 6.5 ट्रिलियन फ्रॉम 2001 till 2022। ये इसके अलावा है। तो इसका मतलब क्या? यूएस का ओरिजिनल जो डिफेंस खर्चा है सालाना, वो आराम से $1300 बिलियन प्लस है। द एवरेज टोटल डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ यूएस goes well above $1300 बिलियन।
$13 ट्रिलियन कर दो, 1.3 ट्रिलियन कर दो, नहीं 13 ट्रिलियन ही, 1.3 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन में 1000 बिलियन होते हैं, ठीक है, ओके। उसके अलावा फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 1.3 ट्रिलियन, 11.3 नहीं, 1.3 ट्रिलियन खर्चा करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, हेल्थ पे इसका खर्चा है। मिसाल के तौर पे वैक्सीन डेवलपमेंट, WHO को पैसे देना, स्पेस पे खर्चा करना, एग्रीकल्चर में रिसर्च पे खर्चा करना, फिजिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, अर्थ साइंसेस, स्पेस साइंसेस, सोशल साइंसेस, स्कॉलरशिप्स देना, बाहर लोगों को स्कॉलरशिप्स देना, दुनिया में एकेडेमिया के लिए जो हेवन है फॉर एकेडेमिया आज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। एंड गो ऑन। ऐसे कई सारे मसले हैं यूनाइटेड स्टेट के बजट के साथ जिसकी वजह से उस पर इतना सारा कर्जा जमा हुआ है, राइट। नेक्स्ट सोल्यूशन, इंक्रीज इन द डेट सीलिंग, इंक्रीज इन द डेट सीलिंग, ये बता रहा हूं ये क्या है। इट इज अ फिनोमेना in which the maximum limit of acquiring loan is being set by the US Congress. And the government cannot cross that limit. हुकूमत उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकती। Whenever US government cannot meet its expenditures, like in 2023, 18, 13, or 11, it approached the Congress to increase, sorry, to raise the debt ceiling, to raise the debt ceiling, यानी कर्जे के मैक्सिमम वॉल्यूम को एक्वायर करने का जो लिमिट है वो बढ़ा दिया गया, इसको डेट सीलिंग कहते हैं, छत यानी आखिरी लिमिट। This has been the short-term solution. But cannot resolve the economic problem on permanent basis. Cannot resolve the debt problem on permanent basis. Economic नहीं, debt problem on permanent basis. Next, issuance of bonds. United States of America, like any other country, has been issuing bonds. There has not been a single government that has not issued new bonds. एक भी ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी जिसने नए bonds issue नहीं किए. Because the governments cannot meet the expenditure. And issuance of bonds help them to generate money. But this also is a short-term solution, not a permanent. This is also a short-term and not long-term solution.
increase in tax is the permanent solution available. There are bare minimum areas where US can impose taxes. नहीं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है. जहन में एक सेंटेंस है, तुम लोग बाहर ऊपर शुरू में लिख दो कहीं पे. One of the major area that is US can impose tax is on the US investments or the investment of the US citizens in foreign countries. Foreign world नहीं, foreign countries. US citizens की investments, the investment of US citizens, the investment of US citizens in foreign countries. US government can impose taxes on the investment of US citizens in foreign countries. But this is highly difficult. Obama failed to do so. Trump did not try at all. Obama ऐसा नहीं कर सका. Obama failed to do so. Trump did not try at all. Nor did Biden. ना बाइडेन ने कोशिश की. उसके बाद increase in decrease नहीं निचला अलग वो आइडिया है. In decrease in spending में खर्चा करे. खर्चा करना है तो किस चीज में खर्चा में कमी करनी है. नंबर 1 R&D क्लास है हेडफोन लगा है. खर्चा कम करना है, कर रहा है, वो तो लीडिंग इस दुनिया से कर रहा है कि वो एक लीडर का लीडर है, रिसर्च में लीडर है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लीडर है. अगर वो खर्चा कम करता है तो उसकी लीडरशिप ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हो जाती है. दूसरा काम का खर्चा कम हो सकता है. डिफेंस स्पेंडिंग अगर वो कम करता है तो वो क्या करेगा. चाइना के लिए रक्षा के लिए अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है वो कम करेगा. अब आवाज कम आ रही है. ठीक है. अब ठीक है कि नहीं. ओके. सो यूएस डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कर सकता है, लेकिन अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर कम करता है तो फिर चाइना को मौका मिलेगा, रशिया को मौका मिलेगा टू राइज, और उनके राइज को यूएस रोक नहीं पाएगा. तो यूएस को बड़े सीरियस चैलेंजेस का सामना है. डन. नेक्स्ट. अब चाइना का जो राइज है, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना, यहां पे एक क्वेश्चन नोट कर दो. मुझे नहीं पता आखिर में या कहीं पे भी आप लोग नोट कर सकते हैं, अपने पास नोट कर दे. मैंने आपको एक और चीज भी पढ़ा दी, एंड दैट इज कि चाइना is playing by the same book. China is playing by the same book US did. US did for its economic rise. You can, for geo-economic and geopolitical rise. Geo-economic and geopolitical rise. अच्छा, वापस चाइना का पॉइंट नीचे ले आओ जी. China has become the world's largest producer
लिखा हुआ है द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुका है। आपको यूएस चाइना में भी पढ़ाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर बन चुका है। किस किस को? ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, आसियान को, मिडल ईस्ट को, अफ्रीकन कंट्रीज को, साउथ अमेरिकन कंट्रीज को, कैस्पियन रीजन को। और फिर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है, लिखो इसी के साथ, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर टू यूरोप। एंड US China trade heavily in the favor of China. US China trade heavily, continue karo, US China trade heavily in the favor of China. और ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि China is a far cheaper producer as compared to United States of America. चाइना बड़ा चीपर प्रोड्यूसर है। और दूसरा, इट प्रोड्यूसेस डिस्पोजेबल गुड्स। इट प्रोड्यूसेस डिस्पोजेबल गुड्स। ये डिस्पोजेबल गुड्स तैयार करता है। which are preferred by the consumer more नाइक से याद आया, आयशा बाबर, आजकल नाइक के जो ऑनलाइन वो देख रहा हूं, वो उन पे एतबार नहीं है। और ये जो नाइक की शूज हैं, उन पे भी एतबार नहीं कर पा रहा हूं, एडिडास के और नाइकी के। आई डोंट नो। दो बार धोखा खा चुका हूं। जब आप के लिए कंफर्ट अहम हो जाए तो फिर आप थोड़ा सा खुद पे खर्चा करते हैं। ओके। दूसरा, आगे जाओ। ये जो यूएस चाइना ट्रेड हेवीली इन फेवर ऑफ चाइना, बात हम पहले कर चुके हैं। ये मिटा दो या रहने दो, तुम्हारी मर्जी है, ये भी हटाओ। उसके बाद यूएस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है एंड गोइंग टू बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी। 19.9 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन चुकी थी पिछले साल, और 2030 तक 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर तो यूरोप भी बन जाएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी में, यानी लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, उसमें चाइना यूएस को क्रॉस कर चुका है। और उसके बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? बीआरआई। ये अलग पॉइंट बनाओ, द ग्लोबल प्रोजेक्ट लाइक बीआरआई, इसको अलग बनाओ। China has become the largest investor in a global project like BRI, Belt and Road Initiative. और इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट इन द 1.3 ट्रिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। कहां कहां पे है इन्वेस्टमेंट? लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर इन
क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इन, लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर लाइक हाइड्रोकार्बन, सोलर, विंड एटसेट्रा। उसके बाद लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर, largest investment in the transport sector, like seaports, bullet train projects, seaports, bullet train projects, motorways and highways. उसके बाद investment in the special economic zones or industrial zones. उसी के साथ कंटिन्यू करें, investment in the special economic zones, agriculture and IT sector. Moreover, China has become a major investor in mega projects like NEOM, etc. और बाकी वही बात दोबारा की गई है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो कौन कौन कह रहा है? फिच कह रहा है, एस&पी कह रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन आखिर में फिर ब्रेक कर रहा हूं, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, however, in spite of all these, लिखा हुआ है, US is still the world largest, या world economic leader। कैसे? अभी भी दुनिया का 58% ट्रेड किस में हो रहा है? डॉलर में। 80% प्लस जो वर्ल्ड ट्रांजैक्शन है, लिखो, more than 80% of the world transaction is of dollar। And no currency seems to have the capacity, and no currency, secondly na kaho, and no currency seems to have the capacity to replace the dollar, the sooner। उसके बाद international trade is mostly conducted through sea and the sea routes। thirdly अलग पैराग्राफ करो। हाँ जी, इंटरनेशनल ट्रेड आज भी मोस्टली कहां से हो रहा है? सी से हो रहा है, और सी रास्ते आज भी अमेरिका कंट्रोल किए बैठा है। ठीक। फोर्थली, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, दैट इज IMF and World Bank and Asian Development Bank, are still mainly controlled by United States of America। मजीद, US is still the world largest market for foreign investment। आज भी वही है। US is still the world largest producer and exporter of defense। 40% प्लस वर्ल्ड वेपन्स एक्सपोर्ट कर रहा है, 40% प्लस
2024 में 23-24 में अमेरिका ने मोर देन 40% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ वेपन्स किए हैं और ऐसे बेतहाशा स्टेप्स हैं. स्टिल द वर्ल्ड लार्जेस्ट या मेजर मार्केट फॉरेन क्या कहते हैं बिलियनियर के लिए आज भी जो फेवरेट मार्केट है, फेवरेट डेस्टिनेशन है, वो आज भी क्या है? वॉल स्ट्रीट है. वॉल स्ट्रीट इज स्टिल द फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर वॉल स्ट्रीट. न्यूयॉर्क में कई सारे स्ट्रीट्स हैं. वन ऑफ द स्ट्रीट इज वॉल स्ट्रीट और वो वॉल स्ट्रीट आज भी बिलियनियर के लिए फेवरेट स्ट्रीट है. For the billionaires across the world. For the billionaires from across the world. ऐसा बहुत कुछ और है, राइट? मैंने एक पॉइंट किया, उसके बाद बकिया पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? ब्रेक करते हैं 15 मिनट्स. 15 मीन्स 15, ओके?
जी एक्सेट्रा। ये आखिरी सेंटेंस में उठा दे। ओके, लेकिन अब क्या हुआ है, सेटबैक्स टू यूएस क्या क्या हुआ है इन द रिसेंट टाइम। पहला मेजर सेटबैक यूएस को हुआ है इन अफगानिस्तान। कैसे हुआ? यूएस brought in the largest number of troops into Afghanistan, more than 100,000. Brought in the latest military technologies to Afghanistan. Fought the longest ever war in its history, the most expensive war in its history. But after 2 decades of long fighting, back to Taliban. तालिबान से पावर लिया गया था, तालिबान को वापस पावर दे दिया गया। एक बड़ा सेटबैक। दूसरा, इराक, द मिलिट्री एडवेंचर इन in 2000 fell into the unending civil war. इराक में अनएंडिंग सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। आईएसआईएस है, अलकायदा है, अल-नुसरा है, महदी मलेशिया है, इराक फोर्सेस है, कुर्द है, आपस में सब लड़ रहे हैं। कुर्द, कर्द, forces, Kurds fighters, Kurd fighters, etc. उसके बाद फिर यूएस, Saudi Arabia and Arab World Alliance in Syria. US Saudi Arabia led alliance in Syria failed and जिन्होंने सपोर्ट किया किसको? फ्री सीरियन आर्मी को एंड अल-नुसरा। किसके खिलाफ सपोर्ट किया? अगेंस्ट बशर अल-असद गवर्नमेंट, बशर अल-असद की हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया। और फिर रशिया, ईरान, हिजबुल्लाह एंड Assad government alliance, Assad, Bashar al-Assad and Assad government alliance dominated in Syria. उन्होंने dominate किया। कैसे? As they defeated Free Syrian Army, Al-Nusra and ISIS, and more than 80% of the lost territories, 80% plus इलाके जो इन नॉन स्टेट एक्टर्स ने पकड़े थे, एफएसए ने, अल-नुसरा ने, आईएसआईएस ने, वो सीरियन हुकूमत ने वापस पकड़ ली। इसके अलावा फिर यूएस ने बार बार कोशिश की फॉर अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रिजोल्यूशन पास करवाने की कोशिश की फॉर अ मिलिट्री इंटरवेंशन इन सीरिया, लेकिन रशिया ने इसको वीटो कर दिया। और रशिया ने
आखिर में लिखते रशियन गवर्नमेंट Russian government on one hand, Russian government on one hand and Iran on the other provided weapons, ground forces, air force, to the government of Bashar al-Assad to fight against the non-state actor. ठीक है ना? तो हमने यहाँ पे देखा कि यूएस को यहाँ पे भी रिट्रीट हुआ और ये क्या था? रशिया का रिसर्जेंस था, रिसर्जेंस ऑफ रशिया था ना। अब रिसर्जेंस ऑफ रशिया यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ हाईलाइट करूंगा, क्योंकि यूक्रेन जिनको पढ़ाया है मैंने ये पढ़ाया है, जिनको नहीं पढ़ाया उनको पढ़ाऊंगा, सिर्फ की पॉइंट्स यहाँ पे नोट करना। रशिया की रिसर्जेंस हुई कहाँ पे? और रशिया का डोमिनेट ये देख लिया। जॉर्जिया पे रशिया ने क्या कर दिया? हमला कर दिया इन 2008 और उसको नेटो ज्वाइन करने से रोक दिया। और उसने क्या कहा? एग्रीमेंट साइन किया विद रशिया कि वो न्यूट्रल रहेगा इन रशिया नेटो राइवलरी, रशिया नेटो राइवलरी में वो न्यूट्रल रहेगा। उसके बाद रशिया ने बाय फोर्स एनेक्स कर दिया क्राइमिया, यूक्रेन का ये पार्ट था और उसको रशिया ने एनेक्स कर दिया फोर्स के साथ। और यूएस रिजोल्यूशन लेके आया इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और उसको रशिया ने वीटो कर दिया। 2022 में यूक्रेन पे हमला कर दिया है और ये सारी चीज आपको मैं पढ़ाऊंगा। और अब क्या है? वाइड स्प्रेड फियर है इन यूरोप, और वो क्या है कि रशिया इज बैक। मतलब क्या? यूक्रेन के बाद हर मुल्क कहता है मेरी बारी, फिनलैंड कहता है मेरी बारी है, एस्टोनिया कहता है, क्या कहते हैं, लिथुआनिया कहता है, पोलैंड कहता है कि हमें भी रशिया नहीं छोड़ेगा। Right? So these and more are the key examples of the resurgence of Russia. वासे वीटो पावर पर एक अलग कंसेप्ट है, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। जब भी कोई रिजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पास होता है या प्रेजेंट होता है तो 5 परमानेंट मेंबर में से कोई एक मेंबर अगर इसको वीटो कर दे तो वो रिजोल्यूशन पास नहीं होता। आप सबको इस बात का पता है। सबसे ज्यादा रिजोल्यूशन जो वीटो किए हैं वो अमेरिका ने किया है इन द फेवर ऑफ इजराइल किए हैं, और इसलिए आज तक इजराइल दुनिया पे जो मिडिल ईस्ट में जो करना चाहता है वो करता रहा है। रशिया ने भी वीटो कर दिए। अब क्या वीटो कर दिया तो यूक्रेन जो क्राइमिया है वो अपने साथ उसने मिला लिया, अब दुनिया कुछ नहीं कर सकती। राइट? ओके। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is still the world military hegemon. इन तमाम बातों के बावजूद यूएस क्या है? The global military hegemon. How? But how? कैसे? दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी आज भी यूएस की है। 12 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बहरी बेड़े हैं, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स है, न्यूक्लियर सबमरीन्स है, इन न्यूक्लियर बम कैरी करने वाले और यूरेनियम से चलने वाले सबमरीन्स हैं, वॉरशिप्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, फ्रिगेट्स हैं,
और कहानी को आन, और दुनिया के तमाम मेजर सीज में उनका होल्ड। उसके बाद यूएस के पास दुनिया का लीडिंग एयरफोर्स है। ये हाउ पिरामिड हाउ, कैसे? F-16, F-22, F-35, C-130, C-140, B-52, 53 नहीं, B-52, और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स लाइक कोबरा, ब्लैक हॉक, एयरबॉर्न उसके पास। उसके बाद फिर एक और हेडिंग बनाओ, ये स्टेप डाउन कर दो एक, हाँ जी, मिसाइल्स लाइक लेजर गाइडेड मिसाइल्स हैं, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसके पास, एंटा एंड एक्स्ट्रा कॉन्टिनेंटल मिसाइल है उसके पास। उसके बाद एक नंबर ऑफ बेसिस इन द वर्ल्ड, तकरीबन कोई 700 बेसिस इसके पास दुनिया में है, और सेकंड इन कंपटीशन जो है वो रशिया है विद जस्ट 33 बेसिस। एक और हेडिंग बनाओ, यूएस हैज एनसर्कल्ड चाइना एंड रशिया, बल्कि ये कोई एनसर्कल कर चुका है चाइना को, रशिया को, थ्रू इट्स मिलिट्री बेसिस, encircled China through its military bases, alliances with the world countries, etc. उसके बाद उसने मिलिट्री अलायंसेस बनाए हुए हैं, मिलिट्री अलायंसेस बनाए हुए हैं, लिखा हुआ मिलिट्री अलायंसेस बनाए हुए हैं लाइक नेटो, क्वाड, अकूस वगैरह। नेटो 32 कंट्रीज का अलायंस है, क्वाड 4 ममालिक का अलायंस है, यूएस इंडिया, क्वाड में यूएस है, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। अकूस में it is a nuclear powered submarine deal. It is a nuclear powered submarine deal of US and UK with Australia. और ये इन तमाम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? The objective of these are to contain Russia on one hand, to contain Russia in the Eastern Europe, and China in the South and East China Sea. उसके बाद आखिरी पॉइंट, the world largest defense budget. Done? तो आज भी दुनिया का मिलिट्री हेजेमन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसके बाद फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका is not only leading in the military technologies, but the world leader in non-military technologies too, leading
मिलिट्री टेक्नोलॉजीज नहीं है, सिर्फ लीडिंग इकोनॉमिक पावर नहीं है, बल्कि साथ साथ में लीडर है इन द टेक्नोलॉजी, नॉन मिलिट्री टेक्नोलॉजी। कैसे? कि पॉइंट नंबर 1 बनाओ, द वर्ल्ड लीडिंग इंटरनेट सिस्टम, दुनिया का लीडिंग इंटरनेट सिस्टम उसके पास है। एन ईमेल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर गोज वाया यूएसए। उसके बाद फिर फेसबुक है, गूगल है, याहू है, व्हाट्सएप है, और फिर ट्विटर है, जितने भी हैं सारे के सारे यूएस के पास। तो वर्ल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम पे यूएस का होल्ड है। और उसको स्ट्रांगली मॉनिटर कौन करता है? नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। फिर नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, द वर्ल्ड स्पेस सिस्टम। अच्छा, एडवर्ड स्नोडन वो शख्स था जिसने एनएसए लीक्स किए थे। एडवर्ड स्नोडन वो शख्स था जिसने एनएसए लीक्स किए थे। नेशनल फेमस फॉर एनएसए लीक्स। वर्ल्ड स्पेस सिस्टम नासा कंट्रोल कर रहा है। कितना कंट्रोल है? आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, रशिया का, पाकिस्तान का, नॉर्थ कोरिया का, या किसी भी मुल्क का मिसाइल सिस्टम है और न्यूक्लियर मिसाइल है, जैसे वो फायर करते हैं विद इन 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड के अंदर अंदर, 3 सेकेंड्स, मैक्सिमम 7 सेकेंड्स, मिनिमम 3 सेकेंड्स, मैक्सिमम 7 सेकेंड्स, यूएस सैटेलाइट उसको कैप्चर कर लेता है। और वो भी न्यूक्लियर, रिमेंबर। नेक्स्ट, तो बच्चे जो स्पेस देख रहे हो यूएस के कंट्रोल में है। उसके बाद फिर यूएस इज नॉट ओनली द लीडर इन टेक्नोलॉजीज बट ऑल्सो द लीडर इन द पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, इसका एक और बात वो कर दो, पॉइंट बिल्ड कर दो, पॉइंट नंबर 3। नहीं नहीं, इससे पहले एक और कर दो। while the while the opponents of China, sorry, of US, like Russia and China, have their own communication system that is only restricted to the territorial boundaries of those countries, of these countries, territorial boundaries of these countries. Currently, China is giving tough time to US in technologies like 5G, cyber, उसके बाद ये क्या कहते हैं इसको, सेमीकंडक्टर्स, एक्सेट्रा। ये वाली बात जो पॉइंट नंबर 1 है उसके साथ ऐड कर दो, यहां से काट के ना जी, काट के इसके साथ नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ, यहां पे कर दो नेक्स्ट पैराग्राफ।
ये कलर हेडिंग है, यूएस इज द लीडर इन द पॉलिटिकल सिस्टम टू। वहां पे क्या पॉलिटिक क्या है? इस क्वेश्चन के बाद नहीं, नेक्स्ट कर दो जी। चाइना ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक अलायंस। और इसके साथ फ्रेज दूसरा लगा दो, तो चैलेंज द यूएस लेड, नहीं नहीं उसके साथ ही लिखो हेडिंग में, टू चैलेंज द यूएस लेड वर्ल्ड ऑर्डर। इसके जवाब हम कैसे लिखेंगे? रशिया चाइना, पहला पॉइंट, रशिया चाइना ग्रोइंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। उसका एक बड़ा पॉइंट क्या है? याद रखो, फाइनल मैगजीन में मैंने इस पे बड़ा लिखा है, इस मैगजीन में भी लिखा है जो कमिंग है, लेकिन फाइनल में मैंने इस पे हद करने की कोशिश की है। नंबर वन, सबसे पहला क्या है? दैट इज China has become the largest importer of Russian oil. China has become the second largest importer of Russian gas. इससे क्या हुआ? It helped Russia to, to fund its war in the eastern, in Ukraine, to fund its war in Ukraine. कैसे? रशिया main source of earning is hydrocarbons. Europe imposed sanctions on, quick, Europe imposed sanctions on the import of Russian oil and gas. It could have seriously hampered its war strategy in Ukraine.
giving upper hand to NATO against Russia. But that did not happen. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. As China decided to increase its oil and gas imports from Russia. इसी का नेक्स्ट पैराग्राफ बनाओ. Russia decided to reduce the prices of its oil and gas by more than 35% to the global energy prices, from which numerous countries benefited, particularly India and more importantly, China. The import of cheaper hydrocarbons helped China to avoid hyperinflation and continue cheaper production of its industrial goods. इसका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होगा? On the contrary, बिल्कुल contrary step हुआ. Europe and US became the worst effectors of global price hike. As both are facing the highest ever inflation in the last 4 or more decades. And the major reason for the price hike, the major reason for the price hike is expensive hydrocarbons, the import of expensive hydrocarbons, the import of expensive hydrocarbons. एक और बड़ा पॉइंट, अब देखिए इसको ए बी सी में तकसीम कर लो तो बेहतर हो जाएगा. ये 1 मिनट, ये जो 1 है यहां से ए कर दो और फिर नहीं 3 पैराग्राफ हमने ऊपर बनाए पागल. उसके बाद फिर हमने एक और पैराग्राफ बनाया. चाइना डिसाइडेड, नहीं ये नहीं, हाँ ये हाँ जी, ऊपर जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक ही रखने दो. रशियन हाइड्रोकार्बन, 1 मिनट, इसको यूं हेडिंग बनाओ. रशिया चाइना ग्रोइंग energy ties and its geopolitical implications. अब हेडिंग क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट एक और बनाओ. रशिया चाइना ग्रोइंग strategic alliance
and its implications. क्या हुआ है? Number one, सबसे पहला point, China has become the largest supplier of chips or semiconductors to Russia. Historically, Russia imported chips from Europe and Japan. But in the recent years, these countries cut down their chip exports to Russia. It was an opportunity, a golden opportunity for China to fill the gap, to fill the vacuum, and export cheaper semiconductors to Russia, which would fulfill its defense and transport, electronic and electrical needs. जो चिप इन चीजों में चाहिए वो उसकी जरूरत को नहीं करना. एक और इसमें आखिरी सेंटेंस और भी ऐड कर दो. Resultantly, Russia has successfully continued its war strategy against Ukraine. Due to the uninterrupted supply of chips from China. तीसरा हमने क्या देखा? Russia has sold its strategic weapons like S-400 missiles, and Su-35 jet fighters to China. Su-35 jet fighters to China. That अच्छा एक मिनट अब that को full stop कर दे. S-400 missiles are the anti-ballistic missiles that would strengthen the Chinese defense system in case of any foreign attack. Before that, China did not have any anti-ballistic missile capacity.
Su-35 jet fighters are the fifth generation fighters that would further strengthen Chinese air defense system. These two Russian military technologies enhanced the Chinese geostrategic capabilities in the South and East China Sea. Done? अच्छा, एक और फैक्टर बताता हूं. Reasons for the growing relations between the two countries. नंबर 1, इसको हेडिंग बनाओ और ये बच्चा फिर. हाँ जी. Number 1, Russia has geostrategic apprehensions in the Eastern Europe due to continuous expansion of Europe into the immediate neighborhood of Russia. Moscow wants to contain China also want the containment of NATO and the Russia as a major power. As the fall of Russia negative consequences not only for Russia but also for China. दूसरा, China has increasing geostrategic apprehension पहले concerns लिखो, geostrategic concerns in the Indo-Pacific region in general, South and East China Sea in particular.
और वो कैसे? The military alliances like Quad, AUKUS, strategic partnership with AUKUS, AUKUS, Kuning K, strategic partnership with India, military deployment in the South and East China Sea, and taking the side of Taiwan are the major strategic concerns of China. To counter that, China needs not only economic capabilities, but also to have strong defense system. Therefore, और फिर उसके बाद Russia also wants China not only to retain but dominate in the South and East China Sea and put US on the back foot. To dominate in the South and East China Sea and put US on the back foot. That is the reason the two countries are increasingly collaborating with each other. ऐसे कई सारे और बातें आप पढ़ेंगे, खुद भी पढ़ेंगे। मैं पढ़ेंगे। बताएं क्या मैंने पूरी एफर्ट की और अच्छा पढ़ाया? तो फिर दुआओं की दरख्वास्त। जज़ाकल्लाह। मैं मीटिंग क्विट कर सकता हूं? आप फिर वो शेयर कर दें। चले, अल्लाह के हवाले।